ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस समझेंगे. So this is a basic structure of a nephron. This is called the collecting duct. This is the distal convoluted tubule, proximal convoluted tubule. This is the Bowman's capsule. This is the descending loop, ascending loop, and this is the loop of Henle. यहाँ पे there is an afferent arteriole and an efferent arteriole. This is a simplification. ये ऐसे करके निकलता है. And this this is called a glomerular tuft. And ये इधर जाके ऐसे से wind up कर देता है, जिसको vasa recta बोलते हैं. Now if we take a cross section from here, what we're gonna see is a structure that looks something like this. We're gonna have जो capillaries है, blood vessels है, we're gonna see them on cross section. Okay. We're gonna see we're gonna see mesangial cells. And हमारे okay, so the layers of the Bowman's capsule and the glomerular tuft, इसको अगर हम microscopically examine करें, so we're gonna see here the जो capillary है, we're gonna see the capillary endothelium. We're gonna see the basement membrane, which has 3 layers, one of which is dense. This part is dense, so we call it lamina densa. This is called lamina rara. This is also called lamina rara. But endothelium तो internal और epithelium तो external. And यहाँ पे we have Bowman's capsule का epithelium, which has slit pores, so it has finger-like processes called podocytes. यही चीज़ को ये हम vertically देखें, अभी हम इसको cross section में देखेंगे. ठीक है. So what's gonna happen here is we have capillaries, mesangial cells, and we have a basement membrane that's gonna cover the endothelium. ठीक है. और उसके बाद what are we gonna have? Epithelium or podocytes. Okay. Now इसके अंदर अगर हम लोग इस पार्ट में फोकस करें, which we'll need to do to describe glomerulonephritis, because glomerulonephritis is non-immune mediated and immunologically mediated. Immune में we have antigen antibody complexes which form, which is 90% of the time, or cell mediated immunity, or we have complement pathway activation. Antigen antibody में we have 3 types. Basically 2 types. एक में circulating antigen antibody complexes होंगे and एक में planted होगा, मतलब in situ होगा, as in inside the kidney cells होगा. उसमें we have planted antigen, जहाँ planted antigen होगा या फिर fixed antigen होगा. Planted antigen मतलब वो कहाँ से आके नेफ्रॉन्स में कलेक्ट हुआ है और उसको फॉलो करते हुए एंटीबॉडीज है. और फिक्स्ड एंटीजन मतलब बॉडी का ही कोई एंटीजन है, उसके अगेंस्ट ऑटो इम्यूनिटी है, एंटीबॉडी आके स्टिक कर रहा है. So now we're gonna see this part, and we're gonna see these 3 types of antigen antibody mediated glomerulonephritis, immunological glomerulonephritis. So first, to draw this, we're gonna draw a box. Okay, and we're gonna have a basement membrane. Okay, basement membrane के नीचे क्या आता है? अपना endothelium. So this is the endothelium. The endothelium, and here we have the epithelium with its food processes. ठीक है. यहाँ पे also we have some podocytes.
and यहाँ पे will make some messenger cells. Anyways, now अगर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है, जो इम्यून कॉम्प्लेक्स है, जिसको मैं इससे रिप्रेजेंट करूँगा, अगर ये एंडोथीलियम अंदर यानी कैपिलरी के अंदर इधर है, तो दैट्स द फर्स्ट स्टेप, दैट्स सर्कुलेटिंग एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस. ये कब होता है? जैसे SLE है या कोई डिजीज है, उसकी वजह से इम्यून कॉम्प्लेक्सेस आर फ्लोइंग अराउंड द ब्लड, तो दैट विल कॉज दिस फॉर्म ऑफ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. देन कम्स प्लांटेड वाला. लेट्स सपोज हम लोग को कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो गया और एंटीजन आके इधर सब एंडोथीलियम में अपने आप को प्लांट कर दिया है. वी हैव एंटीजन्स प्लांटेड इन दिस अमंग्स द एपिथेलियल लाइनिंग. तो फिर यहाँ पे बॉडी में एंटीजन ब्लड के थ्रू आएंगे एंड दे विल गो हियर एंड दे विल फॉर्म एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस. अगर सब एपिथेलियम में वी हैव एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस, देन दिस इज कॉल्ड सब एपिथेलियल deposits, and subepithelial deposits is seen in planted antigen. फिक्स्ड एंटीजन का मतलब क्या होता है? जैसे कोलाजन है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन का, उसी को ही बॉडी ऑटो इम्यूनिटी रेस्पॉन्स के लिए द एंटी बॉडी आर गonna go and react with it and we will have glomerular damage. This is seen in fixed antigens. उसके हिसाब से we have the classification. Classification में okay, well, location के हिसाब से it can be subepithelial, it can be epimembranous, it can be subendothelial and it can be mesangial deposits. Epimembranous और intramembranous. ठीक है. Now classification is of three types. Glomerulonephritis is of not basing on cause but basing on the type of disease. We have primary, we have secondary and we have hereditary causes. Primary में we have acute primary glomerulonephritis or post streptococcal glomerulonephritis, rapidly progressing glomerulonephritis, minimal change disease, membranous glomerulonephritis, membranous proliferative glomerulonephritis, focal proliferative glomerulonephritis, focal and or diffuse proliferative glomerulonephritis, focal segmented glomerulosclerosis, IgA nephropathy and chronic glomerulonephritis. Secondary में we have SLE हो गया, diabetes mellitus हो गया, amyloidosis हो गया और गुड पैस्चर सिंड्रोम हो गया. हेरिडिटरी में वी हैव 3, Alport syndrome, वी हैव नेल पटेला सिंड्रोम, ये दोनों सिंड्रोम्स हैं, एंड वी हैव फेब्रीज डिजीज, दैट्स ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस.